I'm going to start with internal carotid blood supply to brain. Blood supply to brain हमारे पास 3 आर्टरीज मेनली सप्लाई कर रही हैं. कौन कौन सी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी की फ्यूजन से बेसिलर आर्टरी. ये 3 आर्टरीज जो है हमारे पास ब्लड सप्लाई के अंदर रोल प्ले करती हैं. अब इंटरनल कैरोटिड की अगर हम बात करें तो इंटरनल कैरोटिड से हमारे पास मजीद 5 ब्रांचेस निकलती हैं. एंटीरियर सेरिबेलर, मिडल सेरिबेलर, ऑफ्थैल्मिक, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड कोरॉइडल. ये जो आर्टरी है ये है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कौन कौन सी निकली है हमारे पास? एंटीरियर सेरिबेलर, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, मिडल सेरिबेलर आर्टरी, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी वो यहाँ पे नहीं दिखाई हुई, और कोरॉइडल आर्टरी. इंटीरियर सेरिबेलर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर सेरिबेलर जो है वो हमारे पास उसकी होती है कॉर्टिकल ब्रांचेस जो कि कॉर्टेक्स को सप्लाई करेंगी, और कुछ है सेंट्रल ब्रांचेस. कॉर्टिकल ब्रांचेस हमारे पास कैसे सप्लाई करेंगी कि ये हमारे पास अगर सेरिब्रम है, सेरिब्रम का हमने ले लिया मीडियल साइड, मीडियल सरफेस को सप्लाई करेगी कॉर्टिकल ब्रांचेस. और अगर हम इसको यूं करके ड्रॉ करें, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हो गए, तो इसमें यूं मीडियल साइड पे 1.5 सेंटीमीटर का लेग एरिया होता है, वहाँ पे भी हमारे पास सप्लाई करेगी प्री सेंट्रल गायरस का एरिया. यहाँ पे भी हमारे पास कौन सप्लाई करेगी? एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी. इसके अलावा हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, यहाँ पे जो हमारे पास इसके अंदर न्यूक्लियाई वगैरह प्रेजेंट है लेंटिफॉर्म कॉर्डेट, उनमें से लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स और इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करेगी एंटीरियर सेरिबेलर. इसके बाद हम बात करते हैं मिडल सेरिबेलर की. मिडल सेरिबेलर की अगर हम बात करें तो मिडल सेरिबेलर जो है उसकी भी कॉर्टिकल और सेंट्रल ब्रांचेस होती हैं. इसकी कॉर्टिकल ब्रांचेस हमारे पास सप्लाई करेंगी जो एरिया हमारे पास इंटीरियर ने छोड़ दिया. इंटीरियर ने कौन सा एरिया छोड़ा है? हमारे पास लेटरल सरफेसेस ऑफ हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसको सप्लाई करेगी, एक्सेप्ट जो कि हमारे पास लेग एरिया इंटीरियर सेरिबेलर सप्लाई करेगी. उसके अलावा सारा एरिया को सप्लाई करेगी मिडल सेरिबेलर. इसके अंदर हमारे पास आएगा सारा मोटर एरिया एक्सेप्ट लेग एरिया. इसके अलावा ये सप्लाई करेगी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को, कॉर्डेट न्यूक्लियस को, इंटरनल कैप्सूल को. लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को, कॉर्डेट को और साथ में इंटरनल कैप्सूल को. ये सारी चीज़ें हमारे पास सप्लाई होगी मिडल सेरिबेलर और इंटीरियर सेरिबेलर से. इसके बाद हमारे पास ऑफ्थैल्मिक आर्टरी. ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास नाम बता रहा है उसका कि वो आई को सप्लाई करेगी, और इसकी टर्मिनल ब्रांचेस जो है वो हमारे पास ब्रेन में कहाँ सप्लाई करेंगे? एथमॉइडल और फ्रंटल साइनसेस, एयर साइनसेस को सप्लाई करेगी. नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग. पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी को ज्वाइन कराएगी सर्कल ऑफ विलस से. ये आर्टरी है हमारे पास मिडल सेरिबेलर आर्टरी जो कि सर्कल ऑफ विलस से बाहर है, और ये वाली आर्टरी जो कि ज्वाइन कर रही है पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी को सर्कल ऑफ विलस के अंदर, इसका नाम है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी. नेक्स्ट आर्टरी है हमारे पास कोरॉइडल आर्टरी. कोरॉइडल आर्टरी हमारे पास ब्रांचेस देती है क्रस सेरिब्री को, यानी कि मिड ब्रेन में, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक ट्रैक, इंटरनल कैप्सूल. कोरॉइडल आर्टरी हमारे पास क्रस सेरिब्री, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक ट्रैक्ट और इंटरनल कैप्सूल को ब्रांचेस देगी. To revise the whole story, we go to start with internal carotid artery. Internal carotid artery enters skulls through carotid canal. It gives 5 branches: anterior cerebellar, middle cerebellar, ophthalmic artery, posterior communicating artery, and choroidal artery. Anterior cerebellar artery supplies medial surface of cerebellar cortex and leg area on the surface of cortex, which is the precentral gyrus area, lentiform nucleus, and a part of internal capsule. Middle cerebellar artery is the second branch of internal carotid artery, and it supplies lateral surface of cerebrum except the little area, leg area supplied by the anterior cerebellar artery. It also supplies lentiform nucleus, internal capsule, and caudate nucleus, and supplies the motor area of the brain or cerebrum. Ophthalmic artery is the third branch of internal carotid artery. Ophthalmic artery supplies eye and orbital structures, frontal and sphenoid, ethmoidal and frontal sinus, dorsum of nose and frontal area. Then the fourth one is the posterior communicating artery, which joins posterior cerebellar artery to the circle of Willis. And choroidal artery. Choroidal artery is the fifth branch of internal carotid artery. Supplies crus cerebri, lateral geniculate body, optic tract, and internal capsule. Crus cerebri and lateral geniculate body are located in the midbrain. Next one is the vertebral artery. Vertebral artery has 5 branches: meningeal, posterior spinal, interior spinal, posterior inferior cerebellar. It is not spinal, it's posterior inferior cerebellar, and medullary. Going to repeat: meningeal, posterior spinal, interior spinal, posterior inferior cerebellar or pica, and medullary artery. Meningeal supplies the dura mater and bone in the posterior cranial fossa. Posterior spinal, as the name indicates, supplies the spinal cord posterior 1/3. Anterior spinal supplies the spinal cord anterior 2/3. Posterior inferior cerebellar artery or pica supplies inferior surface of vermis. Vermis is a part of cerebellum and central nuclei of cerebellum, undersurface of cerebellar hemisphere, medulla oblongata, and carotid plexus of fourth ventricle. यानी कि it supplies cerebellum, medulla oblongata, and fourth ventricle. Last one is the medullary artery supplies the medulla oblongata. To revise it: meningeal artery, meningeal supplies the posterior
cranial fossa, dura mater and bone. Posterior spinal splice the posterior third of spinal cord. Anterior spinal splice anterior two-third of spinal cord. Posterior inferior cerebellar splice cerebellum and medulla. Medullary splice medulla oblongata. These are the vertebral arteries, and these join to form the basilar artery. Basilar artery is the third artery supplying the brain. This is the posterior inferior cerebellar artery. This is the anterior spinal. These are posterior spinals. Next is the basilar artery. Basilar artery is formed by the union of two vertebral arteries. It has branches: posterior cerebellar, pontine, labyrinthine, anterior inferior cerebellar, and superior cerebellar. Posterior cerebellar, cerebral, pontine, labyrinthine, ICA or anterior inferior cerebellar, superior cerebellar. The cerebellar arteries splice cerebellum, superior splice the superior surface, pons, pineal gland, and superior medullary vellum. Anterior inferior splice anterior and inferior part of cerebellum, pons, and medulla. Labyrinthine splice internal ear related to the balance. Pontine splice pons. Posterior cerebellar splice has cortical, central, and choroidal branches. Cortical branches splice temporal lobe, occipital lobe, thalamus. Central splice thalamus, midbrain, lentiform nucleus, and pineal and medial geniculate body. And choroidal splice the choroid plexus of lateral and third ventricle. Fourth ventricle is supplied by the choroidal branches of internal carotid, and the rest of lateral and third ventricle choroidal plexus is supplied by posterior cerebellar artery. This is the basilar artery formed by the union of two vertebral arteries. It has labyrinthine artery, pontine arteries, and posterior cerebellar artery, and anterior inferior cerebellar artery. So the brain area related to arteries are corpus striatum and internal capsule or the nuclei of cerebrum are supplied by medial and lateral striate branch of middle cerebellar artery and anterior cerebellar artery. Thalamus is supplied by posterior communicating basilar artery and posterior cerebellar artery. Midbrain is supplied by posterior cerebellar artery, superior cerebellar artery, and basilar artery. Pons is supplied by basilar artery and anterior inferior and superior cerebellar arteries. Medulla is also supplied by these all anterior, posterior, posterior inferior cerebellar, basal, anterior posterior spinal, and vertebral. Cerebellum is supplied by superior, anterior, inferior, posterior, inferior, superior cerebellar, anterior inferior cerebellar, posterior inferior cerebellar arteries. Then the veins of the brain are superior cerebellar vein, superficial middle cerebellar vein, and deep middle cerebellar vein. These drain into the superior cerebellar in the superior sagittal sinus, middle cerebellar in the cavernous sinus, middle cerebellar drain cerebral hemisphere, lateral surface, and insula. They all join at last form the straight sinus, internal cerebral vein or thalamostriate vein, and choroidal vein. Then which areas of brain are drained with which vein? Midbrain is drained by basal or greater cerebral vein. Pons is drained by basal or cerebral vein of the neighboring sinus. Medulla oblongata is supplied by spinal vein and neighboring vein, and cerebellum is drained by great cerebellar and adjacent sinuses.